جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اب ہم کر رہے ہیں لیکچر 31 MGT 501 اور یہ ہے ہمارا موٹیویشن، ایکسپلین موٹیویشن۔ یہ اسی پہ اونلی موٹیویشن پہ ہی اس کو جو ہے کیا جائے گا کور۔ موٹیویشن از دا انر ڈرائیو دیٹ directs the person's behavior toward goals۔ مینس کہ موٹیویشن ایک ایسی ڈرائیو ہے جو کہ ایک دھکے کی صورت میں دی جاتی ہے، ڈائریکٹلی، جو کہ ایک پرسن کے بیہیویئر پہ بہت اچھا اثر کر سکتی ہے یا کرتی ہے، اور اس کے گولز کو بھی بہت اچھے سے کور کرتی ہے۔ نیکسٹ، واٹ از موٹیویشن امپورٹنٹ؟ موٹیویشن کی امپورٹنس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر موٹیویشن از امپورٹنٹ ان گیٹنگ اینڈ ریٹیننگ پیپل۔ موٹیویشن ٹولز act as the glue that links individuals to organizational goals. In addition, make individuals go beyond the job and be creative. The motivation process۔ یہاں پر کیا ہو سکتا ہے کہ موٹیویشن جو ہے کیسے کی جا سکتی ہے، کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہے ہمارے پاس ایک کچھ بنی ہوئی ہے ڈائیگرام، تو یہاں پر ہے نیڈ مور منی فار ایکسپیکٹڈ میڈیکل ایکسپینسز، گول ڈائریکٹڈ behavior, ask for a raise, work harder to gain a promotion, look for a higher paying job, steal, need satisfaction, more money۔ تو وہی چیز ہو گئی کہ جو موٹیویشن جو ہے اس کے لیے یہ ساری کی ساری جو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ اس پہ جو ہے بہت زیادہ اچھا جو پازیٹیو سوچیں، اور جو اپنے گولز ہیں اس پہ جسٹ جو ہے اپنی محنت کریں اور اس پہ فوکس رکھیں، اور جو ہے اس طرح سے جو ہے سارا کچھ ایزیلی ہو سکتا ہے۔ اسی کو موٹیویشن کہتے ہیں۔ کور فیزز آف دا موٹیویشنل پروسیس۔ اچھا، تو یہاں پر جو تھا ہمارے پاس موٹیویشن پروسیس، اس میں بکس بھی ہو سکتی ہیں، بکس، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ سیمینارز، پھر کلاسز، اور اس کے بعد گڈ ایکسرسائز، گڈ ہیلتھ، گڈ فوڈ، یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کور فیزز آف دا موٹیویشنل پروسیس: need identification, searching ways to satisfy needs, selecting goals, employee performance, consequences of performance, reward or punishments, reassessment of need deficiencies۔ تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس، اچھا اس میں جو ہے نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ کس چیز کے لیے جو ہے فیل کیا جا رہا ہے کہ موٹیویشن ضروری ہے، اور جو ہے وہ کون سا گول ہے جو اچیو کرنا ہے جس کے لیے جو ہے موٹیویشن ضروری ہے۔
Next, searching ways to satisfy needs. तो यहाँ पर है कि जो सर्चिंग जो है उसके लिए कुछ वेज को हाईलाइटेड किया जाता है, लिखा जाता है। और फिर उसमें जो है उन सब को के ज़रिए जो है सेटिस्फाई नीड्स जो हैं उन्हें सर्च किया जाता है। उसके बाद सिलेक्टिंग गोल्स, वही के जो गोल्स हैं वो अचीव करने के लिए वो उन्हें सर्च किया सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। इसमें है कि एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको मद्देनज़र रखा जाता है। consequences of performance, reward और punishment। यहाँ पर ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ को समझा जाता है, देखा जाता है उनकी परफॉर्मेंस को, और उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है, और जो है जिनके परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होते हैं उन्हें पनिशमेंट भी दी जाती है। नेक्स्ट है रीअसेसमेंट ऑफ नीड डिफेंस डेफिशिएंसीज। यहाँ पे ये होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को दोबारा से देखा जाता है, और फिर दोबारा से उन्हें रीअसेसमेंट में लाया जाता है, और देखा जाता है कि उन्हें मज़ीद कितने मोटिवेशन की ज़रूरत है और किस किस चीज़ की ज़रूरत है और कितनी उनमें कोई कमी बाकी है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा और कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे motivational theories. Motivational theories seek to explain why employees are motivated by the satisfied with the one type of work than another. Maslow's need hierarchy. Abraham Maslow organized five major types of human need into a hierarchy. Physiological, safety or security, social, ego, self actualization. नेक्स्ट कौन सा है हमारा, एक्सिस्टेंट रिलेटेडनेस, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस, ग्रोथ, ERG थ्योरी। Alderfer focuses on three needs: existence, relatedness, and growth. MC Gregor's theory X and theory Y. MC Gregor's theory X represented the traditional management view that employees are lazy, was uninterested in work, and needed to be prodded to perform. Expectancy theory. Expectancy theory states that a person's motivation to exert a certain level of effort is a function of three things: expectancy, instrumentality, valence, motivation.
motivation equals E multiplied by I multiplied by V. नेक्स्ट है हमारे पास reinforcement theory in 1911. Physiologist Edward Thorndike formulated the law effect behavior that is followed by the positive consequences probably will be repeated. तो यहाँ पर ये चीज़ें इनकरेज और डिस्करेज पीपल्स बिहेवियर, तो ये इनके कुछ पॉइंट्स हैं. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन. पनिशमेंट बोल दिया मैंने आई थिंक ना. ठीक है. Herzberg's two-factor approach. Herzberg two-factor theory divides Maslow's hierarchy into a lower level and a higher level set of needs and suggests that the best way to provide motivation for an employee is to offer to satisfy the person's higher order needs, ego and self-actualization. Next, MC Cleland needs for affiliation, power and achievement theory. MC Cleland agrees with Herzberg that higher level needs are most important at work. Adams equity theory assumes that people have a need for fairness at work and therefore values and seek it. जी तो नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. तो ये मेथड्स हैं हमारे, इनके भी जो है ज़्यादा जो है इसके डिटेल में किसी भी चीज़ की नहीं जाना ज़्यादा. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे रिवॉर्ड्स, चैलेंजिंग जॉब्स, उसके बाद क्या है हमारे पास यूजिंग मेरिट पे, using sport awards, using skill based pays, using recognition, using the job redesign, using empowerment, using goal setting methods, using positive reinforcement, using lifelong learning. नेक्स्ट चैलेंजेस ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़. तो ये है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ के जो चैलेंजेस हैं वो. तो यहाँ पर है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, favor entry level employees, and oversupply of managers. जी तो यहाँ पर आ गई हमारे की टर्म्स. एक्सटिंक्शन,
withdrawing or failing to provide a reinforcing consequence. Punishment administering an aversive consequence. Positive reinforcement applying a valued consequence that increases the likelihood that the person will repeat the behavior that led to it. Motivation is the inner drive that directs a person's behavior toward goals. Next lecture 32, the occupation, health and safety. Explain elements of workplace safety and health. तो यहाँ पर ये है कि ऑक्यूपेशन है उस पे देखा जाएगा, हेल्थ पे और जो है सेफ्टी पे देखा जाएगा। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारी कंपनीज बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं कि वहाँ पर बहुत गर्म जो जगह होती हैं वहाँ पर बहुत से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं जिनकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए जो है ज़िम्मेदारी कंपनी की होती है, और उन्हें समझाना, उन्हें बताना, हर चीज़ को मैनेज करना जो है ये सारा कुछ जो है। और खुदा न खास्ता अगर कोई हो जाता है हादसा वगैरह तो वो फिर उसकी भी ज़िम्मेदारी जो है उसी कंपनी को लेनी होती है। और ताकि उनकी जो हेल्थ है उसके लिए कुछ काम किए जाएँ और उनका इलाज किया जाए। Elements of workplace safety and health. Safety involves protecting employees from injuries due to work-related accidents. Health refers to the employee's freedom for physical or emotional illness. तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए जो सेफ फिज़िकल कुछ चीज़ें हैं ये हमारी, ठीक है। फिज़िकल कंडीशंस, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। जी ये दो हैं फिज़िकल कंडीशंस क्या हैं, रिपीटेटिव एंड मोशन इंजरीज, बैक पेन, कैंसर etc. Physiological conditions, dissatisfaction or withdrawal, mistrust in other, in irritability. Next is safety programs. ये क्या है? Today it has become clear that optimal health can generally be achieved through environmental safety, organizational charges and different lifestyles. Developing safety programs, organizational safety programs require for planning for prevention of workplace accidents. Tremendous economic losses can result from accidents. तो यहाँ पर है हमारे पास जॉब hazard analysis, the super fund amendments, reauthorization act, title 3 SARA. So employees involvement
accident investigation, evaluation of safety programs, rationale for safety and health trends. तो ये थे हमारे पास इसके। उसके बाद जो है रिजल्ट्स और फार्म एक्सीडेंट्स के जो लॉसेस हैं उनको कवर अप करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास जॉब हैज़र्ड एनालिसिस के जॉब के मुकम्मल जो हैं एनालिसिस किए जाएं और उसमें से जो भी ज़रूरी अशिया हैं उन्हें निकाला जाए ताकि जो है वहाँ पर सेफ्टी जो है वो बरकरार रहे। उसके बाद ये सुपर फंड अमेंडमेंट्स के उसके लिए एक फंड जो है वो मुकर्रर किया जाए ताकि जो है लोगों को उससे फ़ायदा हो। और उसके बाद एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पर यह है कि एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जाए इसके फैसलों के लिए और समझने के लिए कि उसमें क्या क्या चीज़ों की इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से जो है एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ये बहुत ज़रूरी होती है। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी शक्ल की हो सकती है, ठीक है। जो एक्सीडेंट एक दफ़ा ज़ाहिर है कि अगर कोई जैसे मशीनरी जो है वो गिर गई है, जो टूट गई है, तो फिर उसका वो भी एक एक्सीडेंट ही होता है। और अगर वो एक दफ़ा हो गया तो दूसरी दफ़ा ना हो, इसलिए जो है उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाती है ताकि पता चलाया जा सके कि वो एक्सीडेंट जो है वो क्यों हुआ है, उसकी वजह क्या थी, फिर वो उसको जो है कवर अप किया जाता है। Main causes that can create accidents at workplace are chance occurrence, unsafe working conditions, unsafe act of by employees, unsafe conditions. उसके बाद है हमारे पास फिज़िकल कंडीशंस। इसमें क्या है डिफेक्टिव इक्विपमेंट, inadequate machine guards, lack of protective equipment, इमोशनल कंडीशंस। इसमें क्या है नॉइज़, डस्ट, फार्म्स, स्ट्रेस, अनसेफ बिहेवियर्स। तो इसमें क्या है हमारा चांस ऑकरेंस के एक जो मशीन है वो उसमें काफ़ी सारी खराबी आ रही है, लेकिन उसको जो है उसको चलाया जा रहा है, हालांकि उससे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अनसेफ वर्किंग कंडीशंस कि वही हो गया कि एक मशीन जैसे ब्लैक वाला धुआं निकालना स्टार्ट कर दिया है उसमें से उसने, तो इस तरह से जो है उसमें काम वहाँ पर काम करना जो है वो अनसेफ होता है। उसके बाद है अनसेफ एक्ट्स बाय एम्प्लॉयज़ के जो है कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कुछ गलत जो है वो मेथड्स यूज़ करते हैं मशीनरी के साथ, जिसकी वजह से नुकसानात होते हैं। अनसेफ कंडीशंस के जो कंडीशंस जैसे मैंने अभी बताया कि वो ब्लैक वाला जो धुआं है वो आ रहा है और वहाँ पर सारे के सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और अब उनका जो है वहाँ पर दम घुट के मर जाने का भी खदशा होता है। उसके बाद है फ़िज़िकल कंडीशंस। ये क्या है हमारे पास कि इक्विपमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि उस वहाँ पर वो गलत इफ़ेक्ट्स ना करें। उसके बाद जो है कुछ गार्ड्स होने चाहिए मशीन के। उसके उसके बाद अच्छा इनएडिक्वेट मशीन गार्ड्स।
تو مشین گارڈز جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ جو کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں. لیک آف پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کے جو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتے ہیں. ایموشنل کنڈیشنز میں نوائز، شور میں، اس کے بعد ڈسٹ، ظاہر ڈسٹ جو ہے منہ کے ذریعے لنگز میں چلی جاتی ہے، جس سے بہت زیادہ کھانسی اور بہت ساری بیماریوں کا باعث بنتی ہے. اس کے بعد سٹریس، ظاہر نوائز وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر، تو اس کی وجہ سے سٹریس ہوتا ہے. اس کے بعد انسیف بیہیویئرس کے وہاں پر جو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ انسیف بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ایویلیویشن آف سیفٹی پروگرامس، تو سیفٹی کے لیے کچھ پروگرامز بنانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ریشنل فار سیفٹی اینڈ ہیلتھ ٹرینڈس، یہاں اس کے ہیں کچھ ریزنز انکلوڈ ہیں پروفیٹیبلٹی، امپلائیز کین پروڈیوس اونلی وائل دے آر آن دا جاب، ریلیشنز. اس کے بعد ریڈیوسیبلٹی، پھر ہے ہمارا مارکیٹنگ. اس کے بعد این افیکٹیو سیفٹی پروگرام میں بوسٹ مورل. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ویز ٹو مینیج سیف اینڈ ہیلتھی انوائرمنٹ ان آرگنائزیشن. تو یہاں پر ہے ہمارے پاس کچھ ویز ہیں، ویلنس پروگرامز ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ سیفٹی پروگرامز، امپلائی اسسٹنٹ پروگرام، یہاں پر ویلنس پروگرامز. تو یہاں پر ویلنس پروگرامز جو ہیں ان کا جو ہے آگے کچھ پوائنٹس ہیں. تو اٹ ہیلپس امپلائیز آئیڈینٹیفائی فائنینشیل ہیلتھ رسکس تھرو اسکریننگ اینڈ ٹیسٹنگ. It educates employees about health risks such as high blood pressure, smoking, poor diet, and stress. It encourages employees to change their lifestyles through exercise, good nutrition, and health monitoring. جی، تو یہاں پر ہمارے پاس اسموکنگ ان دا ورک پلیس، کے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے دا ریوارڈز آف گڈ ہیلتھ ہیبٹس. Effective safety programs share the following features that include the formation of safety committee and participation by all departments within the company. Employees participate in safety decision and management carefully considers employees' suggestions for improving safety. Then communicate safety with the multimedia approach that includes safety lectures, films, poster, pamphlets, and computer presentations. They use incentives, rewards, and positive reinforcement to encourage the safe behavior. They communicate safety rules and enforce them.
They use safety directions and or the safety committee to include it in regular self-inspection and accident research to identify potentially dangerous situations and to understand why the accidents occur and how to correct them. नेक्स्ट ये हमारे पास पॉलिसीज और टू prevent workplace violence, and to deal with violence incident when they occur. नेक्स्ट हमारे पास cumulative trauma disorders. जी तो यहाँ भी इसकी एब्रीवेशन बन रही है cumulative trauma disorders. ये है CTDs are also called repetitive stress or motion or strain injuries or illness or syndromes. यह हमारे पास benefits of safety and health workforce, more productivity, increased efficiency, quality, reduced medical and insurance costs, lower workers compensations rates and payments, greater workforce flexibility. The HRM department and the employee safety and health development safety and health programs select safety and health programs, evaluate safety and health programs, they ensure legal compliance, incorporate safety and health concern in HRM practice. Safety involves protecting employees from injuries due to the work-related accidents. Health refers to the employees' freedom from physical or emotional illness. जी तो हमारे 34 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. तो अब हम जो है नेक्स्ट 33 लेक्चर्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.